Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio guys. Hari ini saya ingin berbicara tentang IKN baru-baru ini guys. Difahamkan bahwa IKN menjadi topik perbualan di media sosial negara asing guys. Pada kali ini saya ingin membahas satu video yang berjudul IKN Nusantara jadi trending topik di media luar negeri guys. Dan sebelum itu video ini saya dapat daripada channel Info Awi Bisana guys. Seperti biasa jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Info Awi Bisana dengan memberikan subscribe, like, share juga komen-komen yang membina guys tanpa basa-basi. Ayo simak video ini. Rossi Studio. Widodo has held the first ever Indonesian cabinet meeting in the new capital city Nusantara. Ibu kota baru Republik Indonesia. Ini Malaysia คุณ guys. ผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันดีว่ารัฐ Ini บาล di อินโดนีเซีย Thailand guys. पिछले 10 सालों तक India. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे। Our next story comes from Jakarta, the capital of Indonesia. Ini di French. Oke. Ini keren guys, keren. Super keren guys. Pernah nggak sih kalian membayangkan bahwa suatu hari nanti Indonesia menjadi sorotan dunia? Bukan hanya sekedar diperhatikan, tapi benar-benar bikin kagum negara lain Wah, dan bikin iri loh. Ini Monas. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu proyek paling ambisius yang sedang dikerjakan oleh Indonesia, yang lagi ramai banget nih dibicarakan di seluruh dunia, apalagi kalau bukan ibu kota negara Nusantara. Yap, ini adalah ibu kota kita yang bakal menggantikan Jakarta. IKN Nusantara ini nggak cuma sekedar kota baru, tapi ini adalah langkah besar bagi Indonesia untuk menghadapi masa depan. Dengan lokasinya di Kalimantan Timur, IKN Nusantara dirancang menjadi kota pintar yang penuh dengan teknologi canggih dan berkelanjutan. Kota pintar Bayangin yang aja, penuh kota ini teknologi. nantinya akan menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang modern, tetapi tetap menjaga keseimbangan dengan alam. Ini adalah sebuah visi yang luar biasa kan? Tapi yang bikin bangga, memang luar biasa cuma guys. kita orang Indonesia yang heboh dengan proyek ini. Media dari berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Amerika, Jepang, Inggris, bahkan India, dan banyak lagi, mereka semua sedang memperhatikan perkembangan IKN Nusantara loh saat ini. Memerhati perkembangan dengan betapa IKN Nusantara beraninya guys. Indonesia dalam merancang masa depan dengan cara yang benar-benar berbeda. Bahkan, banyak dari mereka yang terkesima dengan visi besar kita ini bro. President Joko Widodo has held the first ever Indonesian cabinet meeting in the new capital city Nusantara. This as the outgoing leader looks to reassure investors that his $32 billion mega project is on the right track before he steps down in October. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. ये ट्रेन चीन या जापान की नहीं, इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया ने भी बुलेट ट्रेन का सपना भारत के साथ ही देखा। Iya guys, ini betul-betul dari nol जहां guys. इंडोनेशिया की वूश पिछले साल सितंबर से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है, वहीं भारत को उम्मीद है कि वो अपनी पहली हाई स्पीड ट्रेन अभी 2028-29 तक दौड़ा पाएगा। इंडोनेशिया ने ये कारनामा किया चीन की मदद से, वहीं भारत अपना प्रोजेक्ट चला रहा है जापान की मदद से। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रपति जोको विडोडो के दौर में इंडोनेशिया ने बड़ी आर्थिक छलांग लगाई है। फिलहाल इंडोनेशिया तेज तरक्की करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन क्या आने वाला दौर भी इंडोनेशिया का है? जनसंख्या के मामले में इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। अनुमान है कि कुछ ही दशकों में ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पिछले 10 सालों तक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे जोको विडोडो ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का फैसला किया। ये झलक है इंडोनेशिया के उज्जवल भविष्य की। नुसंतारा अरबों डॉलर निवेश कर तैयार होती देश की नई राजधानी, जिसे जंगल में बनाया जा रहा है। आलोचक इसे फिजूल खर्ची बताते हैं, लेकिन समर्थक दावा करते हैं कि इसमें देश के नए आत्मविश्वास और बढ़ती ताकत की झलक दिखती है।
इंडोनेशिया शायद सबसे अहम देशों में एक, लेकिन सबसे कम समझा गया। Okay guys. पिछले एक दशक में इंडोनेशिया में हुई तरक्की का श्रेय काफी हद तक राष्ट्रपति जोको विडोडो को जाता है। 2014 से नेतृत्व कर रहे विडोडो का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। लोगों को लगता है कि विडोडो साधारण परिवार से हैं और मेहनत के बलबूते ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, इसलिए उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनकी नीति बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने की है। वो स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले अच्छी नहीं थी और उन तक पहुंच भी मुश्किल थी। लोग मानते हैं कि विडोडो ने उनके लिए कुछ किया है। विडोडो की सरकार ने शुरुआत से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे जैसे ढांचों पर सरकारी खर्च साल 2014 में उनके सत्ता में आने के बाद से 3 गुना बढ़ चुका है। इंडोनेशिया भारत की ही तरह गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थन करता रहा है, इसलिए आज की वैश्विक राजनीति में उसके लिए 2 देश बहुत अहम हो जाते हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन और अमेरिका। साल 2014 में अमेरिका इंडोनेशिया में चीन से थोड़ा ज्यादा निवेश कर रहा था, लेकिन पिछले वर्षों में चीन की ओर से आने वाले निवेश ने अमेरिकी निवेश को बहुत पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल इंडोनेशिया में चीन की ओर से आया विदेशी निवेश अमेरिका की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा था। हालांकि ज्यादातर निवेश निकेल की प्रोसेसिंग में किया गया था। इंडोनेशिया चीन और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों में संतुलन कैसे बनाता है, जब ये दोनों बड़ी शक्तियां एक दूसरे को दुश्मन मान रही हैं? ऐसे में इस स्थिति से निपटना नए राष्ट्रपति के लिए बड़ी चुनौती होगी। मुझे लगता है दुनिया में स्थिरता के लिए हमें इंडोनेशिया जैसे देशों की जरूरत है जो चीन और अमेरिका दोनों के साथ संवाद, निवेश और व्यापार कर सके, क्योंकि ये बात इस समय दुनिया में एक स्तर की स्थिरता और एक दूसरे पर निर्भरता लाती है। मुझे लगता है कि इसके बिना संबंधों में तेज और बहुत नुकसान करने वाली दरारों का खतरा रहेगा। इंडोनेशिया अगले कुछ वर्षों के अंदर ही दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इंडोनेशिया को नया राष्ट्रपति मिला है। ऐसे में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी ऊंची आकांक्षाओं को वो सच्चाई में बदल पाएंगे। यानी इंडोनेशिया के पास कई मामलों में अर्थव्यवस्था के तौर पर बढ़त है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। Mereka melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara berkembang, tetapi sebagai negara yang siap menjadi pelopor pembangunan kota masa depan. Dan ini nih yang gak kalah menarik. Saat kita melihat reaksi dari netizen berbagai negara, ternyata banyak juga loh yang iri guys. Mereka melihat proyek IKN Nusantara ini sebagai suatu langkah yang luar biasa dan belum ada tandingannya di negara mereka. Ada yang sampai bilang kenapa negara kita nggak bisa seperti Indonesia ya? Ada juga yang bilang Indonesia sedang menyiapkan masa depan. Nanti kota ini akan makmur, memperluas kemakmuran ke berbagai tempat atau pemerataan ekonomi. Ada juga yang bilang Indonesia sebagai kakak di ASEAN yang saat ini ekonominya sedang tumbuh. Namun, ada juga yang membandingkan dengan pemerintah negara mereka sendiri, seperti komentar dari netizen India satu ini. Mereka bilang kalau mereka tidak produktif atau tidak ada yang dilakukan, kecuali menyalahkan partai politik dan oposisi. Bahkan yang kocak guys, ada yang bilang India telah menaiki tangga populasi dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan peluru. Jadi lucu ya reaksi mereka. Dan di sini kita bisa melihat bahwa IKN Nusantara bukan hanya sekedar proyek, tapi juga simbol kebangkitan dan inovasi dari Indonesia. Jangan salah, ibu kota ini benar-benar dirancang oleh anak bangsa loh, putra-putri dari Indonesia sendiri, nggak pakai konsultan dari negara lain. Itu harus diingat. Bahkan ikon IKN pun digarap oleh legenda seniman dari Bali. Siapa lagi kalau bukan Inyoman Nuarte. Nah, kawan-kawan, proyek ini nggak cuma bikin negara lain iri, tapi nantinya juga banyak membawa keuntungan untuk kita. Dari segi ekonomi, pembangunan IKN Nusantara ini diharapkan bisa membuka peluang besar di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, teknologi, hingga pariwisata. Bayangkan aja berapa banyak lapangan kerja baru yang telah tercipta saat ini saja. Selain itu, dengan adanya pemindahan ibu kota, Jakarta yang selama ini kita kenal sebagai pusat segalanya bisa sedikit bernafas lega. Masalah kemacetan, polusi, dan kepadatan penduduk bisa dikurangi di sana. Dan yang paling penting, pembangunan IKN Nusantara ini juga mempertimbangkan aspek berkelanjutan lingkungan.
sesuatu yang jarang kita lihat dalam proyek besar lainnya di Indonesia. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Kalau IKN Nusantara ini sampai bikin netizen negara tetangga kita iri, masihkah kita pesimis dengan pembangunan ibu kota milik kita sendiri? Aku rasa justru ini adalah momen di mana kita harus benar-benar bangga menjadi bagian dari Indonesia yang akan terus berkembang dan berinovasi. Nah, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Berkembang dan berinovasi. Lebih lanjut tentang masa depan Indonesia yang luar biasa ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah. Demikian guys video terkait dengan perkembangan IKN yang jadi trending topik di media luar negeri guys. Bukan hanya negara jiran yang paling hampir adalah Malaysia, karena Kalimantan dan Malaysia, Malaysia berjiran guys. Malaysia, Brunei berjiran dalam satu kepulauan di mana IKN ini dibina guys. Ini satu mercu tanda paling hebat bagi Republik Indonesia guys. Dalam video ini jelas kita melihat bahwa walaupun sekarang ini kota Jakarta merupakan antara kota yang terpadat guys, dengan populasi manusia seramai 147 juta jiwa guys berada di Jakarta. Dan kita melihat bahwa Jakarta memang sangat padat dengan perkembangan ekonominya. Dengan terbinanya IKN pada kali ini, dia memberi napas kepada kota Jakarta dengan sedikit perubahan dan pemindahan beberapa agensi ataupun pemerintahan di IKN ini, memberi ruang dan peluang kepada Indonesia untuk terus membina satu ibu kota baru yang berteknologi tinggi guys. Negara lain telah lama wujudnya ibu kota guys. Indonesia telah pun lama wujudnya kota Jakarta sebagai ibu kota. Namun Indonesia berani mengambil risiko dengan membuat satu ibu kota baru di Nusantara bermula daripada nol guys. Dengan biaya yang begitu banyak, 33 billion US dollar guys. Wow, satu jumlah yang cukup banyak. Dan Indonesia berani membuat satu perubahan secara drastik dengan keupayaan yang dimiliki oleh Indonesia guys. Walaupun sebilangan kecil ada yang menentang guys, dengan alasan dia merosakkan alam semula jadi di Kalimantan guys. Sebenarnya pemerintah coba mengangkat martabat Indonesia dengan membina satu ibu kota baru berkonsepkan hutan guys, dengan menggunakan teknologi listrik tanpa pencemaran alam. Dengan itu sedikit sebanyak mengekalkan ibu kota baru ini sebagai bebas daripada pencemaran guys. Menurut saya langkah bijak daripada Presiden Jokowi, dan pada nanti bulan Oktober disambung oleh Presiden Bapak Prabowo, Indonesia itu memberi dampak kepada perkembangan ekonomi secara keseluruhannya guys. Apabila IKN ini tertubuh, terbina, maka secara otomatis pembangunan secara sama rata di setiap pelosok Indonesia itu boleh diteruskan guys, karena IKN ini sebenarnya terletak betul-betul di tengah-tengah guys. Kalau di kota Jakarta pada ketika ini, dia terlihatnya kembangan itu hanya tertumpu di kawasan kota Jakarta. Namun selepas ini kota Jakarta juga tidak dipinggirkan guys, dia tetap menjadi pusat perdagangan antara bangsa, namun IKN menjadi pusat pemerintahan yang berteknologi tinggi guys. Indonesia pada masa akan datang menjadi satu negara yang memiliki ibu kota antara yang tercanggih di dunia guys. Menurut Anda bagaimana? Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razi Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye. Kami channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Yo, like and subscribe Razi Studio.